do first of all think. Intrinsic समझते हो ना? The activity itself, no other benefit but than to do the activity for its own sake. ठीक है? This is, you're intrinsically motivated because you want to do it. Intrinsically in there. What are the things human beings want to do it? Okay, I'm going to breeze through it. Things that are challenging, things that are absorbing, things that are interesting, novel, things that are novel. But और इसमें man's and neck कहता है कि ये सारी बातें बहुत ज़्यादा हैं, बहुत, लेकिन essentially things in whose worth you believe in. You believe in their worth, their intrinsic worth. Now a mother is intrinsically motivated to look after her baby because she believes in the worth of this task. Okay? A soldier is intrinsically motivated to take a gun, to take a bullet for the country because he believes in the worth of protecting his country. Sorry? That is intrinsic motivation. Your intrinsic motivation. Extrinsic motivation, where you're doing a task because of some extrinsic rewards. Extrinsic से मुराद ये है the rewards External. that are tangible and that are distributed by an external agency. So doing a job for money, attending the lecture for grades, getting the grades for job, okay, doing the assignment for marks. So you are extrinsically motivated because you want some extrinsic rewards that are separate from the activity itself. अब इसमें अगर हमने डैनियल पे को टच किया तो इसमें अब बहुत ज़्यादा डिबेट्स हैं कि जी कहाँ चीज़ इंट्रिंसिक कहाँ एक्सट्रिंसिक हो जाती है. Many things, but अगर आप चीज़ को खुद करना चाहें ना, the thing you're most motivated if you're intrinsically motivated. See? Okay, extrinsic motivation also works, but intrinsic motivation is okay. आपने भी एक असाइनमेंट, ठीक है, इस पे की लैपटॉप पे, ठीक है, लैपटॉप पे असाइनमेंट करना तंग हो यार, मजा मतलब करनी है यार, ठीक है, वही लैपटॉप है, वही कंप्यूटर है, वही कीबोर्ड है, बट यार मुकाओ यार, खत्म करो, लेट्स बी फाइन, ठीक है, असाइनमेंट खत्म करो, मेरे नहीं, चलो किसी और के लिए, किसी और के लिए, वही लैपटॉप, वही चैटिंग ऑल नाइट, forgetting even water and everything. No, I'm getting somewhere. Please be with me. Intrinsic, extrinsic. Extrinsic reward, intrinsic because you believe in it. You want to do it for the sake of it. Okay. यहाँ पे मैं 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो, मैं कहता हूँ कि आपने इनमें से कोई भी बैग सेलेक्ट करें, आपको 5 रुपये मिलेंगे, आपने उस बैग को वहाँ तक लेके जाना है, 5 रुपये, आप कौन सा बैग, 5 बॉडी बिल्डिंग कौन करता है क्लास में, अब्दुल्ला सर खुद वजन उठा रहे हैं, वही चीज़ वही है, वजन उठाना, ठीक है, 5 के उसको ही वुड डू इट जितना ज़्यादा और, ठीक है. अगर अब मैं आपको कहूँ कि बाहर सर्दियों के दिनों में रात को खड़ी होगी, I used to follow back in 2004
फुटबॉल क्लब वेस्ट हैम वगैरह को, वेस्ट हैम क्लब के बाहर मैंने ठंड बर्फ में लाइनों में लोगों को खड़े हुए देखा है, वही बर्फ, फॉर वेटिंग फॉर द टिकट। यू नो व्हाट इज द डिफरेंस इन ऑल दीज? टूल्स वही हैं, चीजें वही हैं। देयर आर थिंग्स दैट यू हैव टू डू, extrinsic to gain some extrinsic reward, and then there are things you want to do for the sake of themselves, and an ideal इसको क्या कहते हैं, the holy grail of motivation of HR, what we're looking at, look here, we want to shift people from there to want to। इसमें एक प्रॉब्लम है। रायन एंड डेकी जो बहुत फेमस ऑथर हैं, they came up with a theory called cognitive evaluation theory। You know, it was very dangerous। अब इसका empirical evidence भी है डैनियल पिंक के पास। You know, cognitive evaluation theory क्या कहती है? The moment आप extrinsic rewards लगाते हैं, intrinsic motivation खत्म हो गई। The moment आप extrinsic rewards डालते हैं किसी चीज पे, ठीक है ना, punitive और रिवॉर्डिंग, ठीक है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, एक्सट्रिंसिक बाहर से एनवायरमेंटल इंटरवेंशन के में आपकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन कम होगी। मैं और आज के अब मैं आपसे कहूँगा कि आपने आज से अगर फेसबुक पे बैठना है, आपकी परफॉर्मेंसेस पे, ट्रस्ट मी, आपकी मोटिवेशन इंट्रिंसिक खत्म होगी। Imagine telling a mother कि you're raising a boy because you're so motivated, but आपको 10,000 रुपए इस चीज़ के मिलेंगे, she would probably slap। Because ठीक है, ये cognitive evaluation के लिए रायन एंड डेकी की, और इसमें बहुत डिबेट है क्योंकि कुछ इनके कुछ जर्मन काउंटर पार्ट्स ने इसके अगेंस्ट भी रिसर्च की। The results are mixed, but for one thing is agreed, one thing is agreed, negative extrinsic interventions, negative extrinsic interventions like deadlines, like firing, threats of being fired, they definitely reduced the intrinsic motivation। ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल है, आप और आप, I tell you, ये सुने जी, you're both novelists, you're Paulo Coelho, you're Albert Camus, ठीक है, आपने नॉवल लिखना है, आप लिखना है, आपका कोई टाइम लाइन नहीं है, टेक योर टाइम, राइट अ नॉवल। आपने नॉवल लिखना है, डिलीवर इट इन 1 year, डेडलाइन, नेगेटिव एक्सट्रिंसिक। आपकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन, ये अब चीज़ प्रूवन है, टू राइट द नॉवल वुड बी डिक्लाइन। एक्सट्रिंसिक पॉजिटिव पे एक डिबेट है दैट लीज आउट, बट इसके ऊपर देयर इज एन एग्रीमेंट। इवन द मोस्ट हार्शेस्ट जो क्रिटिक्स है रायन एंड डेकी के, दे एग्री कि नो, ये जो नेगेटिव एक्सट्रिंसिक चीज़ें हैं, डेडलाइन प्रेशर, ये दे डेफिनेटली डिक्रीज द इंट्रिंसिक मोटिवेशन। So there are things that you have to do there which are extrinsically motivation. There are things you want to do because you are intrinsically motivated. Sir, going with the Ren and Lecky theory, sir, in certain interviews you see people saying that I am very motivated because I made my hobby my profession. Sir, they should not be motivated then, because with their intrinsic motivation now certain rewards have been attached that should have been decreased. बात ये नहीं है कि आप एक टोटल, अब इसमें अब मैंने went through it because I promised it, but I have just breezed it। अब इसमें आगे अब लिखें मत, मुझे आप लोगों को समझ आनी नहीं है, बाद में आपको कहना है। जो एक्सट्रिंसिक है, प्यूनिटिव की बात मैंने सिर्फ वो बात की जो कि फनली प्रूवन है, उसमें अब फर्दर रिसर्च है कि जो आप एक्सट्रिंसिक चीज़ें देते हैं, ठीक है ना, पहले तो इंट्रिंसिकली रिवॉर्डिंग वो चीज़ें होती हैं जिसमें which give you knowledge, ठीक है, which are stimulating and which give you knowledge, stimulation थी, and will give you acceptance with yourself। एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स में फिर दो कंपोनेंट्स हैं। कोई भी एक्सट्रिंसिक चीज़ मैं देता हूँ, चाहे वो रिकग्निशन है, चाहे वो पे चेक है, चाहे वो बोनस है, उसका एक इंफॉर्मेशनल कंपोनेंट है और एक कंट्रोलिंग कंपोनेंट है, ठीक है। कंट्रोलिंग कंपोनेंट में अगर लोकस ऑफ कॉजैलिटी, ठीक है, इंटरनल है,
तो आपकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। कंट्रोलिंग, सो अब इसमें एक बोनस नॉन कंटिंजेंट होने चाहिए, ठीक है, नॉन एक्सपेक्टेंस होने चाहिए, ठीक है ना, इफ देन रिवॉर्ड्स नहीं होने चाहिए, नो दैट रिवॉर्ड्स होने चाहिए। फिर देयर इज एन इंफॉर्मेशनल एस्पेक्ट, अगर इंफॉर्मेशनल एस्पेक्ट इज trying to increase your perceived competence, your intrinsic motivation would not be affected. But if the informational component is decreasing your perceived competence, ठीक है, your intrinsic motivation will be declined, ठीक है। अब एरिया इसमें है लोकस ऑफ कॉजेलिटी का, ठीक है, हाउ फ्री आई एम। रायन एंड डकी ये कहते हैं कि हमारी डिफॉल्ट सेटिंग है वो फ्री पीपल, इसको एक थ्योरी है सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी, देख लें अगर आप नहीं है, आप बाकी नहीं, आप सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी पढ़े जरा, उसमें है कि जी वी हैव थ्री, हम इननेट थ्री साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, ठीक है जी, कॉम्पिटेंस, ऑटोनॉमी, रिलेटेडनेस। हम लोगों से रिलेट भी करना चाहते हैं, हम कॉम्पिटेंट भी बनना चाहते हैं और हम फ्री भी रहना चाहते हैं। ऑटोनॉमी का एलिमेंट रायन एंड डकी ने उठाया कि जी जब आप एक्सट्रिंसिक चीज़ें डालते हैं तो आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, साइकोलॉजिकली इनहेरेंटली वी डोंट लाइक टू बी कंट्रोल्ड। सो जो आप एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड है उसका जो इंफॉर्मेशनल एस्पेक्ट को छोड़ दें, उसका जो कंट्रोलिंग पार्ट है अगर वो ये शो करता है, ठीक है, कि आई एम कंट्रोलिंग यू, if you do it then I give you, if you deliver well then I give you bonus, so I'm controlling you. So modern organization non contingent rewards, non expectancy rewards पे बात इसलिए कर रहे हैं because if then का ज़माना गुजर गया। अगर आप वो controlling element निकाल दें, controlling elements में से locus of causality external ना internal हो जाए तो फिर आपकी intrinsic motivation पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसकी एक सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी आपने देख लिया, ठीक है। तो इस पे मैंने ये कहा कि द ज्यूरी स्टिल आउट, बहुत से लोग इस चीज़ पे करते हैं कि कौन सी चीज़ एक्सट्रिंसिक है कौन सी इंट्रिंसिक, देयर आर एरियाज दैट आर मिक्स्ड, ठीक है। ऑफ कोर्स एक मदर जो बेबी को रेज कर रही है वो इंट्रिंसिकली भी मोटिवेटेड है, बट व्हेन द चाइल्ड लुक्स बैक एट हर एंड थैंक्स हर, तो वो इसको एक्सट्रिंसिक रिकग्निशन भी मिल रही है। सो बहुत से एरियाज है जो ग्रे हैं, ठीक है, बट वी विल डेलिब्रेट ऑन इट बिकॉज इसका कुछ एम्पेरिकल एविडेंस डैनियल पिंक ने दिया है, ठीक है। मेरे कुछ BBA के 2K8 के स्टूडेंट्स ने वो एक्सपेरिमेंट्स डैनियल पिंक के यहीं पे इसी कैंपस में दोबारा टेस्ट भी किए हैं, दे हैव टेस्टेड एंड द रिजल्ट्स वर सेम, ठीक। अभी के लिए इतना समझ लें कि अ लॉट ऑफ पीपल सेड दैट एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स डिमिनिश इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड एट लीस्ट द प्यूनिटिव एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स डिक्रीज द इंट्रिंसिक मोटिवेशन। I'll just gone through it very briefly. So let's come to the motives. यहाँ देख सकते हैं the drive, the motive. आपने जहाँ लिखा ना सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी, उसके नीचे लिखा रायन एंड डकी। आइडेंटिफाइड रेगुलेशन एक बुलेट पॉइंट, आइडेंटिफाइड रेगुलेशन, इंट्रोजेक्ट रेगुलेशन, इंटीग्रेटेड रेगुलेशन। ये तीन रेगुलेशंस जो है ना, आइडेंटिफाइड, इंट्रोजेक्ट और इंटीग्रेटेड, और चौथी एक्सटर्नल, चार रेगुलेशंस। ये रायन एंड डकी की ये चार सिर्फ रेगुलेशंस, पूरी थ्योरी वुड बी टू कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू। ये जो चार रेगुलेशंस इन्होंने बताई है ना, ये पढ़ लीजिए। सो ड्राइव्स, मोटिव्स, there are three categories of motives and drives: primary,
drives, primary motive, general motive. Good. The primary drives. I have a basic bang my head. Is it a primary drive? Anybody else? तीन कैटेगरी सबको, these girls are right up in तीन कैटेगरीज हैं, तीन ड्राइव्स नहीं है, तीन कैटेगरी इनके अंदर ड्राइव्स हैं, तीन ब्रॉड कैटेगरीज हैं. प्राइमरी ड्राइव्स, यू आर विद मी? जनरल ड्राइव्स, सेकेंडरी ड्राइव्स. प्राइमरी जी, Anger, thirst, and sex. very good. Why? So primary because these are the ones on which we are actually living on. I mean, that comes from the inside. They are physiologically based. They are physiologically based. They are based in your physiology, and they are unlearned. Nobody teaches a child to cry when the child is hungry or thirsty. It's unlearned, and they are based in your physiology. Physiologically based, unlearned. As he aptly said, hunger, thirst, sex, sleep, your basic physiological things, homeostasis. Second category, general drives. Not physiologically based. They are not based in your physiology. भूख नहीं लगेगी आप इसकी वजह, अगर आपकी secondary drive fulfill नहीं हुई. They are not physiologically based, but they are unlearned. When I say unlearned, you remember the stimulus struggle? They are hardwired into your evolutionary setup in your neurological system. So nobody teaches them to do. They are innate. They are inside you, but they are not physiologically based. ठीक है जी? जनरल ड्राइव्स की बात समझ आ गई कि जनरल ड्राइव्स वो ड्राइव जो कि फिजियोलॉजिकली बेस्ड नहीं है बट अनलर्नड है. एग्जाम्पल यहाँ तक समझ आ गई. अब इस पे बड़ी डिबेट है. जो लूथन्स है, लूथन्स कहता है कि जो आपकी क्यूरियोसिटी ड्राइव है या ड्राइव मैनिपुलेशन ड्राइव है, ठीक है, जिसको मॉरिस ने क्या कहा था, डेजमंड मॉरिस ने, जो हमने कवर किया है. एग्जैक्टली. द स्टिमुलस स्ट्रगल, ये एक जनरल ड्राइव है. इट्स अनलर्नड बट इट्स नॉट फिजियोलॉजिकली बेस्ड. फिजियोलॉजिकली बेस्ड चीज़ है जिनका ताल्लुक आपकी फिजियोलॉजी से है, बॉडी से है. ठीक है, ये है प्राइमरी ड्राइव्स. फिर सेकंड कैटेगरी है जनरल ड्राइव्स. ठीक है, दीज आर ड्राइव्स व्हिच नोबडी हैज टॉट यू. दे आर अनलर्नड. ठीक है, however they have got nothing to do with your physiology का से ताल्लुक है. Does anybody teaches a child to be curious, to look things and tear things and हर जगह हीटर में और हर जगह हाथ डाल. ठीक है, so people like Conrad Lorenz, Desmond Morris, even Lutherans, Audrey, ठीक है ना, हर्बर्ट मार्कूजा, जो भी है, ये इन सब ने कहा कि जी ये अनलर्नड है. They are because we have evolved primates, so हमारी evolution की वजह से nobody teaches us. They are unlearned, but they are not clear. So एक चीज जिसपे सबसे एक ड्राइव वो है स्टिमुलस स्ट्रगल और स्टिमुलस ड्राइव. ठीक है, फिर या क्यूरियोसिटी, लूथर इसको कहता है क्यूरियोसिटी मोटिव, क्यूरियोसिटी ड्राइव. मैंने ये सब एक ही चीज है. और वो है क्या? We need optimal amount of stimulation our nervous system from the environment. In other words, we have evolved a nervous system that abhors inactivity, that hates boredom, that wants novelty, that wants new thing. Hence the concept of job rotation. Have we covered it or not? Yes, sir. जी, किसी का कोई क्वेश्चन था? नहीं, कई क्वेश्चंस रहे. अभी यहाँ आप आता हूँ. इससे पहले आप मुझे स्टिमुलस स्ट्रगल, द स्टिमुलस ड्राइव,
the drive to manipulate your environment, to interrogate the इसको exploratory struggle जो है, to explore new things. भाईजान, ये हमने जो कवर किया था, पहले कवर किया है. Sum it up for me. Right now? No. Or the previous one? आज रात 12 बजे. तो वो ये था कि because of our basic instinct तो हमारे जो वो caveman थे वो इसके अंदर Because of the सामने भी लिखा हुआ है. Evolution of the nervous system. इसको पढ़े नहीं समझा है. इसके ऊपर ही क्योंकि हमारे अंदर जो शिकार करने की या जो हंट करने की जो हमारे अंदर नीड है उसको हम स्टिमुलस स्ट्रगल हमारे अंदर जो वो डेवलप होगी बिकॉज इट्स हार्डवायर्ड इन अस कि शिकार तो ईगल्स भी कर रहे हैं. तो ह्यूमन ईगल्स भी शिकार करते हैं. Is it just शिकार? What is the difference between specialists and opportunists? the special opportunists look for the drive, the stimulus, and the specialists are Why? because they think that their needs are fulfilled. They have